In this video, I'm going to talk about how I closed 2 international clients and made more than 3.5 lakh rupees in last 7 days using Loom outreach. Hello guys, if you don't know me, this is Ganesh here. I'm 22 years old. I run a content marketing agency called Voxter Media in which we help coaches to build YouTube sales funnels. Right now, I'm starting a second agency and I'll be documenting the whole process of starting and scaling that business. So if you are someone who wants to learn about freelancing agency business, please consider subscribing. So first, let's understand why personalized outreach. The first and the most important reason to start doing personalized outreach is the increasing competition. आज के मार्केट में हर दूसरा बंदा फ्रीलांसर है, हर दूसरा बंदा एजेंसी ओनर है. जिसको काम नहीं भी आता, उसने एक तो कोल्ड ईमेल भेजना सीख लिया या ऑटोमेशन टूल यूज करना सीख लिया और इज रीचिंग आउट टू क्लाइंट, इज स्पैमिंग. So understand things from the client's POV. The client is getting 20 messages per day that sounds the same, that is selling the same offer and same service. तो क्लाइंट को तो ये लग रहा है भाई ये लोग स्कैम कर रहे हैं. तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस 20 people. What extra can I offer, or how I can make sure I'm not coming off as a person who's spamming? And the best way to do that is by showing your face. The best way to do that is by recording a Loom video. The best way to do that is by adding some personalization. For example, let's say you are selling a YouTube management service and you're going to a client's channel and doing a YouTube audit for that guy. You are giving him real-time value ki what his channel is lacking and how by adding these things or improving these things, he will get drastic results. So that is what I want you to do. The second reason it is hard. Recording Loom videos is hard. Like it will be a short video, 3 to 5 minutes, but फिर भी, if you are someone who's not comfortable in front of camera, it is going to take you 10 to 15 minutes or even 30 minutes in the start. Because आप ये जो video देख रहे हो, this might be 8 to 10 minutes, but it still takes me like 20 to 25 minutes to record it. There are some slutters, there are some time I forget what I want to say. So it takes some retakes and everything. So it's going to be hard. And most people in India are lazy. If you can put out some extra effort, you can easily stand out. And if it's hard, it works. If it's easy, anyone can do it. If it's hard, there is entry barrier. So you can get some drastic result through this. And बहुत सारे लोग नहीं करेंगे. If this video gets 1,000 views, only 5 or 6 people out of them is going to do this. I know that. The third reason to do this is इसका reply rate बहुत ज़्यादा है. Normal cold outreach में appointment booking rate is 0.2. For appointment booking rate क्या होता है? For context, if you're reaching out to 100 people, उसमें से कितने लोग appointment book कर रहे हैं? तो 100 people में तो normal messages में कुछ भी convert नहीं होता. आपको at least 500 लोगों को reach out करना पड़ता है, तभी 1 या 2 calls book होती है. But in the Loom outreach, if you reach out to 40 people and if you're doing it right, you can book 2 calls. आपको last month का statistics बता रहा हूँ. I've reached out to around 200 people and booked around 35 to 40 calls. But this I was able to do with a lot of trial and error. पिछले month इतने calls book नहीं हुए, so it will take some time, but it has a lot of better response rate than normal cold outreach. Now let's come to the how part of it. And the first step to start sending Loom cold outreach is to generate leads. Now you need to understand recording Looms is going to take a lot of effort from your side. For recording one video, if you are a beginner, it's going to take 10 to 15 minutes. उसके बाद उसको आपको काटना पड़ेगा, तो उसमें बहुत time जाएगा. So you only want to reach out to people whom you can expect reply from or who have money to work with you. Let's say your services cost around $2,000 and you're reaching out to people who make $2,000. Of course, they are not going to able to afford your services. And this is a mistake I've observed most people make, that they are reaching out to wrong prospects. Like I've consulted a lot of video editors and their concern is भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है. But मैं उनको बोलता हूँ भाई तूने ICP ही नहीं बनाया है, तूने डिसाइड ही नहीं किया है कि मेरा सर्विस $2,000 का है, तो मेरे को ऐसे लोगों को रीच आउट करना है जो महीने के $20,000 कमा रहे हो. So defining your ICP and being very clear with who you want to work is going to be the first step. And हम लोग सिर्फ ऐसे लोगों को रीच आउट करने वाले हैं, एक तो हॉट प्रोस्पेक्ट्स और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं एंड दे हैव मनी टू वर्क, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू स्पैम आउट एनी पर्सन ऑन द इंटरनेट and it's going to take a lot of effort from your side. So you need to make sure you're reaching out to the right people so you can get some results. ठीक है? So defining the ICP is going to be the first step. तो ICP होता क्या है? ICP basically is your ideal customer profile or your target market. ठीक है? तो उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछना है. The first question is who is your client? तो पहले डिफाइन कर लो कि मैं सिर्फ कोचेस के साथ काम करूंगा एंड उसमें आप थोड़ा और नीच जा सकते हो. स्टार्टिंग में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हैव अ ब्रॉड नीश कि मैं कोचेस के साथ काम करूंगा. उसके बाद डिफाइन करो कि 3 मेन पेन पॉइंट्स ऑफ कोचेस. एक बार आपने पेन पॉइंट को समझ लिया, उसके बाद यू शुड आस्क योरसेल्फ कि
मेरा जो आइडियल कस्टमर है वो कौन से कंट्री में रहता है या कौन से कंट्रीज में रहता है. लेट्स से यू वांट टू टारगेट पीपल इन यूएस एंड यूके, तो वो आप लिखो. ये सारी चीजें जब भी आप पेपर पेन पे लिखोगे तो आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट योर टारगेट मार्केट. एंड द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू आस्क योरसेल्फ इज उनका इनकम कितना होना चाहिए. Let's say your services cost around $2,000 to $3,000. So you need to make sure you're at least reaching out to people who are making $20,000 to $30,000 per month. So उनका सिर्फ 10% of the income होगा. The last thing you want to ask yourself is what do they want? What are their desires? And आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, उनके पेन पॉइंट्स और उनके डिजायर्स. उनके पेन पॉइंट को आप कैसे सॉल्व करके उनको अपने डिजायर्ड आउटकम पे लेके आ सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी योर एंटायर लूम वीडियोस लाइक pitch. Now let's come to the video script. So this is going to be the anatomy of the Loom video script. So it's going to be very simple. First is going to be the intro. For example, hi John, I like what you do. एक compliment दे दिया. उसके बाद आपने उनको बता दिया कि वो अपने YouTube चैनल पे या अपने LinkedIn प्रोफाइल पे क्या गलती कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन their सर्विस. तो आपको उनको ऑडिट देना है. ऑलवेज मेक श्योर कि यू गिव बिफोर यू आस्क. अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो एंड ही लाइक्स व्हाट यू आर गिविंग and it is really valuable. ऐसा नहीं बताना है कि bro I like what you do but you are making some mistakes. वेक नहीं होना चाहिए. It should be very specific. If you are auditing the YouTube channel, give some feedback on the thumbnail. Whatever they are lacking, check the description. You need to be an expert in what you do for doing this. If you don't know what you're doing, first figure that out and then come and watch this video. The next step in the script is going to be the offer and the offer should be no brainer. मैंने offer के ऊपर काफी videos बनाया है, but अगर मैं आपको simple framework बताऊं तो ऑफर ऐसा होना चाहिए कि वो नो ब्रेनर हो. यू हैव टू गारंटी रिजल्ट्स. यू नीड टू मेक श्योर यू आर एबल टू प्रोवाइड आरओआई टू द क्लाइंट. फॉर एग्जांपल, वी विल हेल्प यू गेट द रिजल्ट इन एक्स नंबर ऑफ डेज और यू गेट द मनी बैक. आज के टाइम में इफ यू गो एंड सेल वीडियो एडिटिंग टू द कोचेस, दे डोंट गिव अ फक अबाउट दैट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कोचेस वांट. फिर आपको वापस आईसीपी में जाना है, पेन पॉइंट समझना है एंड उस हिसाब से आपको अपना ऑफर डिजाइन करना है. उसके बाद यू हैव टू गिव सम सोशल प्रूफ ऑफ व्हाई दैट गाय शुड ट्रस्ट यू. आपने अपने पास्ट क्लाइंट के लिए जो भी रिजल्ट्स लाए उसको आप एक केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू जीपीटी. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. बट लेट्स से इफ यू डोंट हैव एनी केस स्टडीज तो यू कैन लेवरेज दिस सेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर रिसर्च. लेट्स से आप एक कोच को रीच आउट कर रहे हो एंड यू आर हेल्पिंग हिम टू जनरेट क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी व्हाट आर द टॉप कोचेस इन हिज इंडस्ट्री डूइंग एंड गिव हिम देयर एग्जांपल. कि Alex Hormozy is sending cold emails or Alex Hormozy is using XYZ funnel to generate leads and we can do the same for you. आप ये नहीं बोल रहे हो कि Alex Hormozy is our client, but you are indirectly saying कि Alex Hormozy ये कर रहा है. Then again we want to touch on their pain points. For example, let's say coaches के सबसे बड़े 2 या 3 pain points कौन सा है? पहला, they rely on referrals. दूसरा, they struggle to fill their calendars. और तीसरा, they do cold outreach to get clients. And this takes a lot of their time. And still they are not able to get the desired results. And then as we discussed, you can do competitor research and tell people, give examples of what they're doing right. And then at the end, you will provide them solution. We can help you do this. And this whole thing should be under 3 to 4 minutes. ठीक है? And end में आपको CTA भी देना है कि you can book a call with me. Directly आप calendar का link भेज सकते हो या आप बोल सकते हो reply interested and I will send you the link of my calendar and you can book a call with me. If you follow the exact process I explained, it is almost next to impossible that you won't get any clients. I will summarize the whole thing for you. The first thing is make sure you are reaching out to qualified prospects. The second step is going to be reach out to 25 people every day. It is going to be tough. It is going to take you 2 to 3 hours of work every day, but put in that work, you will see drastic results in next 1 to 2 months. And if you want me to personally script your Loom video and give you a step-by-step game plan for the next 60 days, you can also book a one-on-one consultation call with me. The link is in the description.